Good morning, everyone. Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay, thank you. So, object-oriented programming subject. In this subject, we already covered 4 units: first, second, third, and fifth unit. Okay, today I am going to teach you fourth unit. Okay, 3 यूनिट हो चुके थे हमारे और फिफ्थ यूनिट मैंने लिया था दिवाली से पहले, दैट इज टेम्पलेट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो टेम्पलेट और एक्सेप्शन हैंडलिंग फिफ्थ यूनिट जो है उसके ऊपर मैंने आपको कल असाइनमेंट भी अपलोड किया है ग्रुप पे. ओके, so assignment on fifth unit, that is template and exception handling, I uploaded on the group. Just you have to complete it. You don't have to submit or you don't have to upload it anywhere till we inform you. So first unit, fundamental of object oriented programming, inheritance and pointers. Second unit, third unit is polymorphism, and fourth unit is files and streams. This is the fifth unit, exception handling and templates, that we completed before Diwali. Okay. Files and streams. What are the contents of this topic? That is data hierarchy, stream and files, stream classes, stream errors, disk file input output with stream, then file pointers and error handling in file input output with member function, overloading the extraction and insertion operator, then memory as stream object, command line argument, and print output. Okay. First, we will see what is the need of file handling. Okay. All programs we looked earlier, that in that program we input data from the keyboard and output to the screen. हमने क्या किया है, इनपुट कीबोर्ड से दिया है और आउटपुट स्क्रीन पे देखा है. Output would be lost as soon as we exit from the program. हम जब एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ इनपुट देते हैं, 10 + 10, 2 नंबर्स दिए, 20 उसका आउटपुट है. लेकिन मैं जब वो प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट करूंगी तो फिर से मैंने इनपुट दिया 10 + 10, तो 40 होना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं. Because whatever we input the value through the keyboard, that is stored in the stack. Okay, and stack is not a permanent memory, it is a temporary memory. What is so जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं फिर से वो प्रोग्राम, उसके पहले जो वैल्यूज होते हैं वो चले जाते हैं. नया इनपुट जो दिया है मैंने 20 + 20, उसका आंसर आएगा 40. लेकिन उसके पहले जो मैंने ए की वैल्यू 10 दी थी और बी की वैल्यू 10 दी थी वो उसमें नहीं रहेगी. ओके, सो
whatever the input we are going to uh, give for the program through the keyboard, that is not permanent. अगर हमने बैंक का कोई एप्लीकेशन बनाया और उसमें उस बैंक के एप्लीकेशन में क्लास बैंक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम कोई कस्टमर का अकाउंट नंबर, उसका कोई नेम होगा, देन उसका कोई डिपॉजिट होगा, उसका कुछ बैलेंस होगा, तो अगर वो एक बार डिपॉजिट करेगा, उसका बैलेंस है 10,000, वो डिपॉजिट कर रहा है 20,000, सो अमाउंट, टोटल अमाउंट इज 30,000, और फिर से उसने हमने वो प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट कर दिया और उसने आउटपुट देखा तो 0 हो जाएगा, उसमें कोई कुछ भी बैलेंस नहीं होगा. So now we want to store the data permanently, or we want our output would not be lost after the execution of the program. So output जो है हमारा वो store रहना चाहिए, इसलिए हम ये चैप्टर स्टडी कर रहे हैं. So what is the solution? What is the problem first? Problem is that data is not stored. This is the problem. Whatever we previously added value, whatever we added previously input is not stored. This is the problem. And then what is the solution? So solution is the files. That is called as file handling. So files is the solution to this problem. File is nothing but a secondary memory storage. Okay. तो हम जो डेटा स्टोर कर रहे थे स्टैक में, that is a volatile memory. It is not permanent, it is a temporary. So we are going for the secondary storage devices like CD, DVD, pen drive, hard disk, etc. Okay. So what is file handling? For this we need file operations. How do we store data permanently? We can use secondary storage devices. Data is packaged up on the storage device as data structure called files. Okay. So this file is one of the data structure. What are the streams we use? We have used streams like cin, already हमने use किया हुआ है. cout, this is also we used before in our programs. Cin is what? Input from stream object connected to keyboard. Input from stream object connected to keyboard. And what is cout? It is the output to stream object connected to screen. मतलब इसमें जो डेटा आएगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा. So output to stream object, this cout is connected to screen, and this cin is connected to keyboard. So we can define other streams that to or from files that is used similarly as cin and cout. So first we will see what is input and output in C++. The C++ language does not define any statement to do input or output. Instead, C++ includes an extensive standard library that provides input-output facility. For the purpose of input and output, we will make use of the two libraries. First is input-output stream library. It is, in short, it is called as input-output stream, in short called as IO stream library.
So IOStream library is made up of two types, that is iStream and OStream. So what iStream do? Input stream, input the stream, and OStream what it do? Output stream. But basically what is stream? A stream is a sequence of characters read from or return to an IO device. So stream is nothing but a flow of characters or sequence of characters we are using in our program, that is a sequence of characters that we are read from and write into IO device. Read from and return to IO device. So standard input output objects. This IOStream library defines 4 IO objects. What are these four objects? First is cin. It is pronounced as cin. Cout. It is a standard output. Cin is standard input. Cerr, this is the standard error. And clog, this is general information regarding the login. जो स्टैंडर्ड एरर्स रहते हैं उसके लिए CR ये ऑब्जेक्ट है. Now out of these 4, these are categorized into 2. So only cin is of type iStream and cout, cl, clog, these are of type OStream, that is output stream. So this is a simple example in which we are using addition of two numbers. So hash include IOStream, this is the header file. Okay, इसमें हम main function use करते हैं, this is the main function. उसके बाद हमने यहाँ पे using namespace std नहीं लिखा है इस प्रोग्राम में. Okay, in this program there is no line or no statement regarding using namespace std. अगर हम यूजिंग नेमस्पेस std नहीं लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, cout लिखने से पहले std कोलन कोलन ऐसा लिखना पड़ता है. ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट std कोलन कोलन cout, and this less than operator is the output operator. Okay, this is output operator. Then in double inverted comma we write something that we want to print on screen. Enter two numbers, ऐसे मुझे display होना चाहिए on the screen. So what is this enter two numbers? Enter two numbers, this is nothing but a string literals. और फिर इसमें हम ENDL लिखते हैं, that is end line. तो ये end line जो है उसको हम किसमें कैटेगराइज करते हैं, क्या है वो, that is the manipulator. Set width, this is also manipulator. When you Google on the C++ manipulators, then there is a ENDL and set W, set width. These are two manipulators you can see as a manipulator in C++. तो हम ENDL क्या है ऐसे किसी ने पूछा, दिस इज अ मैनिपुलेटर. तो ये मैनिपुलेटर हम क्यों यूज करते हैं, फॉर द गुड डिस्प्ले. हमारा जो डिस्प्ले है वो अच्छा डिस्प्ले होना चाहिए मॉनिटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, इसलिए ये यूज किया जाता है एंड लाइन. अगर सभी एक लाइन में ही आपको
डिस्प्ले हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि जैसे बुक में एक के बाद एक लाइन में दिया होता है, तो डिस्प्ले भी एक के बाद एक लाइन में होना चाहिए, सो इट इज रीडेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। दिस इज मैनिपुलेटर। देन उसमें हम n1 n2 these are the variables, these are the variable declaration. We can see this is the block here, variable declaration. Then standard input object, input लेना है हमने, read करना है, that numbers whatever we want to read, n1 and n2, this is the input operator and this is standard input object ce. तो हमारा सिंपल प्रोग्राम जो होता है वो कैसे वर्क होता है? So this is the diagram for file input and output stream. Stream is nothing but sequence of characters. हम क्या करते हैं, डिस्क फाइल जो होता है, डिस्क से हम रीड करते हैं डेटा, रीड डेटा फ्रॉम द डिस्क। जैसे कि मैंने एंटर 2 नंबर्स दिया तो मैं 30 एक नंबर दूंगी, 50 दूसरा नंबर दूंगी, सो आई एम रीड दैट data from the disk. Okay, so that data is placed into input stream, that data is placed into input stream, and after input data processing it pass to the program, जो हम प्रोग्राम है हमारा उसमें पास हो जाता है। so after output data processing, जो भी प्रोग्राम का आउटपुट होता है वो आउटपुट स्ट्रीम में चला जाता है, इट प्लेस्ड इनटू आउटपुट स्ट्रीम, और वो जो आउटपुट स्ट्रीम का डेटा है दैट विल बी रिटन ऑन द डिस्क। ओके, राइट डेटा टू डिस्क। तो ये एक सिंपल डायग्राम है हाउ फाइल इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम वर्क्स। File input stream, that is it reads data from disk. File output stream write, तो याद रखना कैसे है इसको, इनपुट मतलब read the data and output stream means write the data to disk file. This is important. Read data from disk, we are using input stream, and write data करने के लिए data write करना है तो output stream. Okay, the input output stream of C++ contains if stream, op stream and S stream.